Assalamu alaikum dear student, hope you all are fine. So student, last time we covered the chapter Bravo Myra taken from the Expression English book of grade 4. So today we are going to solve the exercise question, but before that let me tell you a little bit about the story in case you haven't watched our previous video. So student, this story is about a girl named Myra, and it was her first day at school, but she was very uncomfortable and was unwilling to go because of two reasons. First, she has no friend there, and second, she has a problem in her limbs. She cannot walk properly, so she thought that student will make fun of me. But after talking to her mother, and she told her that you are a brave girl and be friendly with everyone and everything will be fine. She gave her some chocolate so she can share it with her classmate. So Myra went to the school. As usual, her first day at school wasn't good because she spotted some student laughing at her. Same goes for her for the few days, and she came back to school every day crying. But her mother tell her that no, you are a good girl, you are a brave girl, just be friendly and everything will be fine. So one day when she was going to the swimming class, she spotted a girl in the water and she was asking for the help and she is unable to swim, and Myra jumped in the water, and that's how our story ended. So student, basically they left the story with the question that what do you think would be the ending of the story. So today while doing the exercise question, our first question is read the picture to understand the rest of the story. So now they are giving the picture and they are telling you to find out the story, and also they gave you some outline at the bottom and you have to write the story in your own words. So in the first picture we can see that Myra is holding a hand of a girl and she is asking for help, and in the second picture we saw that two girls are there to help the girl that was drowning in the water, and in the third picture we saw that the girl is out of the water and so does Myra, but the other two girls was accusing her. They thought that Myra threw that girl into the water, and in the fourth picture we saw that that girl is having a medical checkup and she is smiling and pointing her finger to Myra, and others are clapping for her. In the fifth picture we saw that some girl is holding Myra's hand, and in the last picture we saw that Myra has finally made some friend. So student, there is a outline at the bottom of the page 66. The outline is grabbed the girl by her arm, found it difficult, screamed for help. Maheen and her friend came, helped to pull the girl out, accused me of pushing. Principal and school doctor came. Rida recovered consciousness. Maheen, ashamed, apologized, shook hands. Best friend. So student, now we have to write the story. So I'm making a story from this outline. I am sure that you have the pencil and the page so that I can read and you can write. So student, are taking our first outline, that is grab the girl by her arm. So we will write Myra grabbed the girl by her arm. We just add the word Myra at the start of the sentence so that it could make sense. Our second outline is found it difficult. As we know that swimming in the water is already difficult, and holding another girl who is not in her state, so it would be difficult. So we will write she found it difficult to bring her to the platform. So that Myra is finding it difficult to bring the girls to the platform because of the heaviness and also of the water. So the third outline is screamed for help. So what will Myra do that she is finding difficult to take the girl out of the water? What did she do? She starts screaming. So we will write it. She screamed for help. As we can see in the picture that Myra is screaming help, help. So our next outline is Maheen and her friend came.
So who listened to Myra scream? Maheen and her friend. So what happened that when Myra screamed for help, Maheen and her friend came. So we will write Maheen and her friend came there and rushed to help pulling the girl out. So our next outline is help to pull the girl out. We covered the board one. Now move to next. Accused me of pushing. So what happened? She accused Myra for pushing her into the pool because she misunderstood Myra. She thought that Myra pushed that girl into the swimming pool. So she started to say Myra that why did you push her in the swimming pool? Next outline is principal and school doctor came. So what happened next? We will write that Myra was started and give her the first aid. Meanwhile, the principal and the school doctor came. Moving on to our next. Rida recovered consciousness. So what happened next when she get the first aid? Rida recovered consciousness and told that she was alone when her foot slipped and she fell into the pool. So what happened when Rida, that girl who was drowning in the water, when she come out of her unconsciousness, she told everyone truth that when she was near the pool, her foot slipped and she fell in the water, and Myra helped her. Our next outline is Maheen ashamed. Definitely the Maheen was ashamed. Why she was ashamed? Because she accused Myra for pushing Rida into the water. So we will write Maheen was ashamed and grateful as well for the help Myra gave. She was ashamed, but she was also grateful that Myra saved Rida. Apologized. Apologize means saying sorry. So what did Maheen do? Maheen, she apologized sincerely. She was sincerely apologizing. And the next in the outline is shook hands. So what happened when Maheen apologized Myra? Both of the girls shook their hands. They both shook their hands as the token of the friendship, and our last outline is best friend. So what happened next? That they become best friend. Okay student, let's move to part B. Complete these sentences to check whether you have understood. So now they have given us some sentences to make sure that whether we have understood the story or not. So the first is Myra was hesitant to attend school on the first day because now they are asking why Myra don't want to go to school. If we have read the story, then we know why. So student Shiva don't want to go to school because her limb makes her self conscious. So the answer is that we will write in the blank is her limb makes her self conscious. Okay student, the second blank is Maheen's behavior made Myra feel. तो माहीन के बिहेवियर से क्या हुआ था, मायरा को कैसा फील हुआ था? एंड द आंसर इज सैड एंड ऑफुल. उसे बुरा लगा था, उसे दुख हुआ था. सो इन द ब्लैंक वी विल राइट सैड एंड ऑफुल. SAD सैड एंड AWFUL awful. Now the third one is during the games period on the first day Myra. जब इनका गेम का पीरियड हुआ था फर्स्ट डे, तो क्या हुआ था? क्या मायरा गेम खेलने गई थी या नहीं गई थी? तो द आंसर इज मायरा वाज इग्नोर्ड बाय गर्ल्स. मायरा को क्या किया था? गर्ल्स ने टोटली इग्नोर किया था और वो उसको छोड़ के चली गई थी. सो इन द ब्लैंक वी विल राइट वाज ignored, IGNORAD, ignored by girls. Now the fourth one is Mama advised the upset Myra too.
मायरा की मॉम ने उसे क्या एडवाइस दी थी, क्या नसीहत की थी? शी एडवाइस हर टू बी फ्रेंडली एंड वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज। उन्होंने उससे बोला था कि तुम फ्रेंडली रहो और कुछ दिन इंतजार करो। सो इन द ब्लैंक वी विल राइट बी फ्रेंडली and wait for a couple of days. Now we are moving to the fifth one. During games period, Myra was permitted to. फिर मायरा को किस चीज़ की परमिशन मिल गई थी? उसके फादर ने जो लेटर लिखा था. So Myra was permitted to go to the pool for swimming. उसे स्विमिंग करने की परमिशन मिली थी. So the answer is go to the pool for swimming. Now we are moving to exercise C. Pick words from the story that indicate that Myra was not very excited about her first day, about her school in the first few days. तो अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप स्टोरी जो है उसको रीड करें और उसमें देखिए कि मायरा स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं थी। अब इन्होंने हमें स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स दे दिए हैं और इन्होंने हमें बोला है कि उसके रिमेनिंग जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो आप स्टोरी से ढूंढें और इसको लिखें। तो फर्स्ट में आपको जैसे स्टूडेंट नजर आ रहा है IN लिखा हुआ है। अब हमने ऐसा वर्ड देखना है स्टोरी से जो IN हो और उससे ये जाहिर हो कि मायरा स्कूल नहीं जाना चाहती थी। तो फर्स्ट वन इज indifferent, INDIFFERENT, indifferent. Now the second is DAW. So the proper word is dawdling, DAWDLING. Now the third one is SO, and we will write SORROWFUL, sorrowful, यानी कि उदास थी, वो नहीं जाना चाहती थी. Now the fourth is DE, demotivated, DEMOTIVATED, demotivated. And the fifth is LO. LO से हम स्टूडेंट बनाएंगे lonely, LONELY, lonely. And the sixth is RE. तो RE से स्टूडेंट बनेगा reluctant, reluctant, RELUCTANT. Okay student, now it's time to turn the page number 68. So there they are saying take the correct sentence. अब जो correct sentence है, आपको दो sentence दिए हैं जो कि काफ़ी similar हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम है तो आपने वो प्रॉब्लम फिगर आउट करनी है और जोन सा सेंटेंस करेक्ट है आपने उसके आगे टिक लगाना है। तो पहली मैं सिचुएशन रीड कर देती हूँ। हमना हैज़ नथिंग टू वेयर टू द पार्टी। हमना के पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं था। हमना हैज़ एनीथिंग टू वेयर टू द पार्टी। हमना के पास सब कुछ है पार्टी में पहनने के लिए। तो स्टूडेंट एनीथिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट में है उसमें पार्ट ए जो है वो करेक्ट है, दैट हमना हैज़ नथिंग टू वेयर टू द पार्टी। तो आप इसके आगे टिक कर दें। नाउ सेकंड, मुस्तफ़ा हैव अ कार। मुस्तफ़ा हैज़ अ कार। तो स्टूडेंट जब भी हम ही शी इट की बात करते हैं तो उसके साथ हैज़ आता है, और आई वी यू दे की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ हैव आता है। तो मुस्तफ़ा जो है वो ही में कंसिडर हो रहा है, तो मुस्तफ़ा हैज़ अ कार जो है वो करेक्ट है। तो आप जो ऑप्शन नंबर बी है उसके आगे आप टिक कर दें। नाउ द थर्ड इज सादिया ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। सादिया इज टेकिंग मिल्क एवरी डे। तो जो स्टूडेंट जो टेकिंग का मतलब होता है लेना, ठीक है। तो ड्रिंक है, सादिया जो है वो हर रोज सुबह दूध पीती है। तो आपका जो सिचुएशन नंबर ए है वो करेक्ट है, दैट सादिया ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। माई फादर बॉट 2 dozen oranges। माई फादर बाइट 2 dozen oranges।
तो स्टूडेंट, क्योंकि ये पास्ट में बात की जा रही है कि मेरे फादर ने खरीदे थे, तो हम पास्ट में जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो बॉट जो है वो हमारी बाय की सेकंड फॉर्म है, और बाइड कोई भी वर्ड नहीं है। बाइड हम कभी भी नहीं लिखते, हम बाय या बॉट ही लिखते हैं। तो जो फोर्थ वाला है उसका ए पार्ट करेक्ट है, उसके आगे आप लोग टिक कर दें। Now the fifth is I prefer ice cream than custard. And the part B is I prefer ice cream to custard. So student, अब वो कह रही है कि मुझे जो है आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है कस्टर्ड की निस्बत, या मैं आइसक्रीम खाना चाहूँगी अगर मेरे सामने आइसक्रीम और कस्टर्ड हो। तो स्टूडेंट, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बी पार्ट है वो करेक्ट है। आप उसके आगे टिक कर दें आई प्रेफर आइसक्रीम टू कस्टर्ड। ओके, नाउ मूव टू द सिक्स्थ वन। देयर आर मैनी शीप्स ऑन द फार्म, and the situation B is there are many sheep on the farm. So student, जो sheep है उसका प्लूरल भी sheep ही होता है, हम कभी भी sheeps नहीं लिखते। तो इस वजह से हमारी जो situation A है वो correct है, there are many sheep। situation जो हमारी है B correct है, there are many sheep on the farm। सिक्स पार्ट का B correct है। Now move to the seventh. Zobia is more taller than Saleha. Zobia is taller than Saleha. अब वो हमें कह रहे हैं कि जो जोबिया है वो सालेहा से ज़्यादा लंबी है, लेकिन क्योंकि ये सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग तो बेशक सेम है, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो मोर की हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो टालर की बात करें तो डेफिनेटली उसका मतलब है कि वो उससे लेंथ ज़्यादा हाइट में है। तो इसलिए जो आपका 7 पार्ट है उसका बी वाला ऑप्शन सही है, जोबिया इज टालर देन सालेहा। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द पार्ट ए। What is the time by your watch? What is the time in your watch? तो स्टूडेंट, बाय का मतलब होता है पर या साइड में, जैसे आपकी घड़ी पर क्या टाइम हो रहा है, एंड व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या वक्त हो रहा है। तो जो है अगर हम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से टेंसेस में देखते हैं तो उसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। नाउ मूव टू द 9th पार्ट। अंकल सैम मेट विद हिज फ्रेंड। अंकल सैम मीट हिज फ्रेंड। तो बेटा जो स्टूडेंट जो इस पार्ट 9 है उसमें जो है हमारा ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि इसमें हमें वो बता रहे हैं पास्ट में, और विद हिज फ्रेंड जो है वो गाने जो ने अंकल सैम मेट हिज फ्रेंड के अंकल सैम अपने फ्रेंड से मिले थे। तो हमारा जो 9 वाला है उसका भी पार्ट बी करेक्ट है, उसके आगे आप टिक मार्क कर दें। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ स्टिल देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, you can write down in the comment section and we will review it and we will do it again. So for now on, goodbye and Allah Hafiz.